Good morning everyone. Today we'll begin with the lesson number 15, the Midnight Visitor. And for today's class we'll have the reading of the chapter. So better open page number 115 of your English reader. Take out your pencils and start reading with me. But as I read the words, as I pronounce, the way I pronounce, try to pronounce the exact way as I am pronouncing, so that you can have a practice at your home. जैसे जैसे जहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ जो वर्ड, बेटा आपने एग्जैक्टली वो वर्ड ऊंची ऊंची बोल के लाउडली रीड करके साथ साथ पढ़ना है. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Audible. Repeat after me. Audible. Audible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Audible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for a figure of romantic adventure. But Audible, in his wrinkled business suit, badly in need of cleaning, could hardly be called a romantic figure. So beta, what does this paragraph conveys? That there was a character named as Audible, character number 1, and there was another character named as Fowler, character number 2 in this chapter. So Fowler had imagined some kind of description, some kind of an image of the person Audible. So what happens is कि when he sees Audible तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. So following him down, जब वो फ्रेंच होटल में उसके पीछे जा रहा होता है, then he observes that Audible had a small room over there, and जो room है वो 6th and top floor पे है, and वो कुछ भी बेटा एक Fowler had imagined कि he is kind of a romantic adventurous person. That means कि he is a thrilling person who likes to have thrill in his life. But Audible was not like that at all to Fowler, and उसका जो सूट था wrinkled business suit था, and he needs cleaning, that he needs to take care of himself, and he cannot be called a romantic adventurous figure, right? Turning page number 116. Now again we'll start reading. He was, for one thing, fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the New England twang he had brought to Paris from Boston 20 years before. So what the lines say, that he was fat, वो fat था. For one thing, कि एक बात है कि वो fat था, and उसका दूसरी चीज़ क्या है कि उसका accent. Accent क्या होता है बेटा? बोलने का ढंग. Excuse me. Now, beta, you speak Punjabi, you speak Hindi, you speak English, right? There are various people living in Punjab. If we are talking about Punjab, there are several people living here. But we see when we switch from region to region, we see a different kind of tone in their Punjabi, right? Like some speak Malvi, some speak Majhi, Doabi, etc., etc. So that is what we call an accent and tone of speaking the language. So what does he say? कि Audible can speak French and he can speak German very well, but उसका जो एक न्यू इंग्लैंड से लाया हुआ टोन था 20 साल पहले लेके आया था बॉस्टन से पेरिस में, वो अभी तक उसका नहीं गया है. फ्रेंच इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, जर्मन इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, एंड जो एक टोन वो अलग ब्रिटिश टोन लेके आया था वो अभी तक उसके पास है, अभी तक उसकी बात में रिफ्लेक्ट होती है, राइट? नेक्स्ट, यू आर डिसअपॉइंटेड, Audible said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic.
You envisioned mysterious figures in the night, secret meetings, and clever disguises. So what does he say? Beta, we are keeping this video especially for the reading part only. I have explained you all in the video we sent before. So we'll be conducting the reading preferably and primarily reading only here, right? So I'll be concluding that possible inferred about the Fowler. तो उसने conclusion बनाया कि आप disappointed हो, आप एक निराश हो चुके हो. क्यों? बिकॉज आपने एक्सपेक्ट किया था दैट आई एम अ सीक्रेट एजेंट. आपको बताया गया था एक खुफिया एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, डिटेक्टिव हूँ जो एस्पिनाज इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट एंड खतरे से डील करता है. एंड तुमने इसी तरह के कुछ पर्सन से मिलने की विश की थी बिकॉज यू आर अ यंग राइटर एंड यू इन्विजन. आपने क्या सोचा हुआ था, प्रोडिक्ट किया हुआ था कि मिस्टीरियस फिगर्स मिलेंगी, अंधेरा, नाइट में मीटिंग्स एंड क्लेवर डिस्गाइजेस, फॉल्स अपीयरेंस. बेटा यू कैन राइट डाउन द मीनिंग्स फ्रॉम द मीनिंग्स रिटन हेयर. रेड वर्ड्स आर ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज, बट द अदर वर्ड्स you can write down. Instead, you have spent a full dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. He says that instead ये सब एक्सपेक्ट किया था, बट इसके अलावा आपको मिला क्या? एक स्लोपी अनटाइडी पर्सन मिला फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एंड जो उसको मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं बल्कि उसको एक ऑर्डिनरी कॉल आता है सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए. एंड इन सब देख के तुम बोर हो चुके हो. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his discomfited guest enter. So इसके बाद जो फैट मैन था ऑसिबल हा डोर ओपन करता है और अपना जो कंफ्यूज्ड गेस्ट है फाउलर है उसको अंदर लेके आता है, अंदर बुलाता है. You are disillusioned, Ossible told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men have risked their lives. Come to me in the next to the last step of its journey into official hands. Someday, soon, that paper may well affect the course of history. In that thought, there is drama, is there not? So what does he say? Ossible कहता है कि नहीं, तुमने अपना फेथ तो जो लूज कर लिया है, आई नो दैट, बट डू नॉट वरी, बट खुश हो जाओ बिकॉज तुम्हें थ्रिल मिलने वाला. थ्रिल क्या? अभी तुम एक पेपर देखोगे जो बहुत ज़रूरी पेपर है, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान जो है खतरे में डाली है, जो अपना कहीं से चल के ऑफिशियल्स के पास उसका लास्ट पॉइंट था पहुंचने का, वहीं बिलोंग करता है. वहाँ पहुंचने से पहले लास्ट एक स्टेप मेरे पास रुकेगा. सो मैं ऑसिबल के पास पेपर आने वाला है, एंड तुम वो पेपर देखोगे, उस जर्नी का एक पार्ट बनोगे, और ये जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है हिस्ट्री के लिए, राइट? तो इसमें ड्रामा है ना, इसमें थ्रिल है ना, तो वो फाउलर से पूछता है. As he spoke, Ossible closed the door behind him. Then he switched on the light. जब ऐसे बोलते बोलते Ossible ने डोर बंद किया एंड लाइट ऑन की. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic in his hand, stood a man. जैसे ही लाइट ऑन होती है बेटा, तो फाउलर को अपने डे का फर्स्ट थ्रिल मिलता है, जेन्युइन थ्रिल, कि हाँ जिसको देख के वो लिटरली थ्रिल्ड हो जाता है. एंड उस कहता है कि हाफ अक्रॉस द रूम, आधे रास्ते में रूम के एक पर्सन खड़ा होता है, उसके हाथ में एक स्मॉल ऑटोमेटिक गन होती है. ऑसिबल blinked a few times. Max, he wheezed, you gave me a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? Max was slender, a little less than tall. His features suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing.
सो ऑसिबल गेट शॉक्ड, ऑसिबल शॉक्ड हो जाता है कि मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे चौंका दिया, मुझे लगा तो तुम बर्लिन में हो। तो और मैक्स का पेरेंट्स कहता था वो स्मॉल था, टॉल नहीं, टॉल से थोड़ा कम था, एंड उसके जो फीचर्स थे, फेस एक्सप्रेशंस कैसे थे, फॉक्स की तरह थे, एंड उसमें सिर्फ उसके गन के अलावा और कुछ भी प्रेजेंटिंग नहीं था।